Good morning, students. Today we will learn about our new short writing topic, that is notice. So first of all, students, let us know that what is a notice. Notice क्या होता है? Notice is one of the most important forms of writing used by individuals, institutions और organizations. जब हमें कहीं किसी एज अ पर्सन या किसी एज एन इंस्टीट्यूशन या कहीं किसी स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में सब लोगों को इन्फॉर्म करना होता है किसी चीज़ के बारे में या अनाउंस करना होता है, तो वहाँ हम नोटिसेस यूज़ करते हैं। और ये अनाउंसिंग किस फॉर्म्स में होती है? मतलब ये कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या किसी भी तरह का नोटिस, कोई ओकेजन हो सकता है, कोई अपील करनी हो सकती है हमको सबको। We will be learning about what all important things are to be written in the notice and what exactly is the format of the notices. So let's see what all things does a notice includes. A notice includes all the following key points. ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है जहाँ पे नोटिस लिखा जा रहा है, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, एक अच्छी सी आई कैचिंग हेडिंग डालनी होती है, एंड डिटेल्स लाइक डेट, टाइम, वेन्यू और क्या प्रोग्राम है, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट। एंड देन कम्स द सिग्नेचर और नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इज शोइंग द नोटिस। जो लोग नोटिस लिख रहे हैं उनको नीचे अपना साइन करना होता है, अपना नाम लिखना होता है और साथ में ब्रैकेट्स में डेजिग्नेशन लिखना होता है। सो दिस इज़ हाउ अ नोटिस लुक्स लाइक। सबसे पहले वी हैव टू मेक अ बॉक्स, a rectangular box, and on the top we have to write the name of the institution or organization. Then we write the word notice in the center, that has to be in capital letters. Then on the left side we write date and then heading of the heading or subject. उसके बाद बीच में we have to write the contents. Contents में I told you what are the important things that are to be written. Make sure that while writing the contents, you have to mention all the important details like date, venue, the program, and then on the left side you will do signature or write your name in the block letters, maybe your name and or according to the notice. आपको नोटिस के हिसाब से जिसने नोटिस लिखा है उसका नाम लिखना होता है, then the designation of that person in brackets. And it's very important to put the notice in a big box. All right, students, so let's get to our next slide. Now these are the important points that are to be kept in mind while writing a notice. We only have to write the relevant information in the notice. इधर उधर की फालतू बात नहीं लिखनी है, only the important information that is given in the question, right? और सारी required details clearly mention करनी होती हैं. Then always write in third person. हमको हमेशा थर्ड पर्सन में बात करनी है, ना कि I, we और you should be avoided. Then the word limit of any notice is usually only in 50 words. So you have to keep your notice short and crisp. But although sometimes notice का टॉपिक या टाइप इतना बड़ा होता है तो वहाँ वर्ड लिमिट हमारी थोड़ी सी एक्सीड हो जाती है, बट देन अल्टीमेटली you have to keep it within 50 words or so, right? I hope you understood. Now let's do one notice and practice with me. So students, there are various type of notices that we will be doing in future, but for now we will be doing lost, found and events or competition types of notice, in which we will be putting a notice or writing a notice on anything which is lost or anything you have found and then you want someone to collect it, वो जिसकी भी है. And the third type will be events or a competition, in which we will be writing notices about an event or a competition. Then tours and meetings we will be doing later. So first of all, we should know that in a lost notice,
जिसमें कोई चीज़ खो जाती है एंड यू हैव टू पुट अप अ नोटिस, उसमें व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू राइट. वी हैव टू राइट अबाउट द आर्टिकल दैट इज़ लॉस्ट, उसको क्लियरली मेंशन करना है, उसका डिटेल ऑफ कलर, ब्रांड, साइज और एनीथिंग यू कैन टेल अबाउट दैट थिंग. एंड देन यू हैव टू मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस, वो जहाँ पे खोया था. यू हैव टू सपोज दैट यू आर द पर्सन जिससे वो लूज हुआ है एंड देन यू वांट टू फाइंड इट बैक. एंड देन यू विल प्रॉमिस अ सूटेबल रिवॉर्ड कि जिसने भी मुझे वो ढूंढ के दिया तो उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा, राइट. And then you have to mention in the end that whom to contact, when and where. All these things should come in the contents. Okay, now let's start with one example of a lost notice. So students, today we will be doing a sample notice of lost. You have lost your 4 GB pen drive that you had brought to the school for your PowerPoint presentation. Write a notice giving the details of the pen drive and request the finder to return it to you as it contains some important digital files. Also promise a suitable reward. Sign yourself as Ankur or Ankita of class 7C, 8C, whatever class you have. Manav Mangal Public School, Sangrur. So you have to write it in 50 words, you can see, and the value points should be article lost के बारे में लिखना है कि कौन सा आर्टिकल है, उसका डेट, टाइम अप्रॉक्सीमेट, प्लेस और उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जैसे कि उसका ब्रांड, कलर, साइज, मटेरियल एट्सेट्रा. दिस ऑल हैज़ टू बी कवर्ड इन कॉन्टेंट्स एंड whom टू कॉन्टैक्ट एंड प्रॉमिस ऑफ अ रिवॉर्ड. रिवॉर्ड एक प्रॉमिस करते हैं हम एंड में लॉस्ट के नोटिस में. So first of all we will make this box and then on the top we will write the name of the institution. Here the name of the institution is the name of the school, that is Manav Mangal Public School, Sangrur, right. Then we will write notice in capital letters. Then we will write the date. Date का pattern आपको पहले भी मैंने share किया था. It has to be 4th बड़ा, not छोटा, May and then 2020 or whatever the date is, because date is not mentioned here, but you have to write it completely, कोई और बीच में कोमा नहीं यूज़ करना है. Then we will write pen drive lost. यहाँ पे क्या लिखना होता है, heading, ऐसी suitable heading जो देखते ही सबको idea हो जाए कि what is the notice about. Then we will write the contents. उसमें हम पूरा description लिखेंगे. A 4 GB pen drive has been lost somewhere in the school. It is a red black color and SanDisk pen drive and contains some important digital files of the owner. इसमें हमने क्या क्या लिख दिया, उसका कलर, उसका ब्रांड, उसका ऑलमोस्ट उसका साइज भी बता दिया, राइट. एंड इट कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट डिजिटल फाइल्स ऑफ द ओनर. ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है आर्टिकल की. द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड इन रूम नंबर 42. अ स्मॉल ट्रीट इज प्रॉमिस्ड. फिर उसने बता दिया कि फाइंडर जो अंडर साइंड यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उनको प्लीज़ फाइंडर ये ला कर दे दें इन रूम नंबर 42 एंड अ स्मॉल ट्रीट इज़ प्रॉमिस्ड. यहाँ हमने प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड भी पूरा कर दिया. देन यू विल साइन योर नेम, देन write the name in capital letters, your roll number and your class, right. That has to be in brackets. So understood how the notice is to be formed. It is very easy. You have to complete it in 50 words and all the important details should be mentioned. जो भी question में दी होती हैं वो ध्यान से देखना होता है और उसमें कुछ add भी करना हो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, but within the word limit, right. This is how a notice looks like. I hope you understood it correctly. You have to do this notice in notebooks. Okay students. So lost type of notice we have done. So in the next class we will be doing our next type of notice. Thank you. Happy learning.